Hello children, I welcome you all in my YouTube channel and Radha online classes. Today I am going to take class 7th and the chapter we are doing is comparing quantities. Yes, we are doing comparing quantities. उसमें हम लोग कर रहे थे exercise 8.3. 8.3 में हम लोग थे question number 5 पे. The question is based on profit and loss, I buy a TV फॉर ₹10,000. मैंने एक टीवी खरीदी 10,000 की एंड सेल इट ऑन प्रॉफिट, और फिर उसको मैंने सेल किया प्रॉफिट लेके 20% मैंने प्रॉफिट लिया. हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट, मुझे कितना पैसा मिलेगा, मीन्स मैंने सेल कितने में किया. सी व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टीवी, दैट इज 10,000 एसपी, आई डोंट नो. Profit percent is 20%, right? This is given to us, means cost price and profit percentage is given to us. I told you in the important formulas, I have given the formula कि अगर आपको CP and profit percentage या loss percentage given हो, then what you will do? Then you will use the formula that 100 plus profit percent divided by 100 into CP. Okay? इससे direct निकल जाएगा. Otherwise, firstly we have to find out the profit. Then after we have to find out the that SP. Okay? See. SP is equal to 100 plus profit percent upon 100 into CP. So हमने इसमें put कर दिया 100 plus profit percent is what? 20. So 20 divided by 100 into what is our CP? This is 10,000. So it will be, this will be equal to 100 plus 20 is 120 divided by 100 into 10,000. Right children? So 20 get cancelled. अब ऊपर क्या बच गया हमारा 1200. That means 1 2 3 one more zero, yes, 12,000. So what is our SP? SP is 12,000. Here is your answer. So simple. Just keep in mind this formula. You will get the आंसर इन अ वेरी सिंपल वे. अदरवाइज 3-4 स्टेप हमें करने ही पड़ेंगे. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट इज ऑल्सो ऑफ सेम टाइप. एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 6. सी चिल्ड्रेन, इन दिस क्वेश्चन यू विल सी जूही सेल्स द वॉशिंग मशीन. नाउ सेलिंग प्राइस इज गिवन टू यू, दैट इज 13,500. ओके, वॉशिंग मशीन सेल किया 13,500. She losses 20%. 20% उसने लॉस किया बार्गेनिंग करने में. 20% लॉस उसको बियर करना पड़ा. What was the price at which she bought it? अब उसने कितने प्राइस में उसको खरीदा. खरीदा means what is the cost price of that washing machine? So let what is given? SP is given to you. What it is? It is 13,500. Okay. We have supposed CP as question mark, means we don't know, we have to find out. See, loss percent is 20% loss में लिया. So what is your CP? I have given you formulas, important formulas. In that you can see CP कैसे find out करेंगे. 100 divided by 100. Loss है तो minus करते हैं loss percentage को. Okay, firstly write the formula. Right children? Firstly write the formula. This is 100 minus no, wait, see children, here 100 in bracket 100 minus loss percent, right? Loss है तो less करते हैं into what? Into SP. Okay, here is our formula. Just put the values in it. This is 100 divided by 100 minus loss percentage. 100 minus what is loss percentage? This is 20 into this is हमारा SP कितना है? 13,500. So it will be 100 divided by 100 minus 20 is 80 into 13500. 1010 cancel and 8 कट करते हैं. 8 1s are 8. 9, 10, 11, 12, 13, 55, 8 8s are 64, 8 7s are 56, 8 6 are 48, 49 50, 49 50 and see it is
चलो 2 से इसको कट कर देते हैं, 8 की जगह 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, नहीं कटेगा ना। ओके, डेसिमल में आ रहा है, नो प्रॉब्लम, नहीं डेसिमल में लाने की ज़रूरत नहीं है, ये आ गया 4 ना, 4 25 ज़ा, ओके मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, ओके नो प्रॉब्लम, जस्ट डू इट इन द साइड। आप रफ कॉलम उस साइड बनाएंगे, 675 मल्टीप्लाई बाय व्हाट 25, 5 5 से 25 की 5 2 35 36 37 3 30 33 इंटू 2 5 से 10 के 0, 2 7 से 14 15 के 5, 2 6 से 12 and 13. So this is 5 7 8 6 and 1. So what is our answer? 16875. This much rupee is the cost price. मतलब खरीदा था 16,875 में और सेल किया उसको कितने में 13,000. That means we bear a loss of 20%. So children, is it clear to you? पहले क्या करेंगे, just directly put the formula. Okay, 100 divided by 100 minus loss percent into SP. 100 divided by 100 minus loss percent कितना है 20 है, into SP कर दिया. So this is 100 upon 80 and just cancel it. You will get what? 16875. 16,875 is your answer. Let's come to next question. So बच्चों, we have done already this 5 and 6 question today. Next question is very very important. It is little bit lengthy also, so I'll tell you in the next class. Be with me there in the next class. मिलते हैं अपनी next video में. Till then, goodbye children. Take care and subscribe, like and share करना ना भूलें. जितना हो सके share कीजिए. Okay, thank you.